Assalamu alaikum everyone, this is Sabahar. Welcome to my session, and I'm just going to go on Facebook and check who's live with me. There's still 1 minute to go, and I'm just going to go there and be back in a jiffy. And in the meantime, those of you who are watching and those who have logged in, do let me know where you are logging from. Are you from Pakistan? Are you from abroad? And if you're able to hear my voice as well. So wherever you're logging in from, do let me know. Okay. So I can see someone at the top of my screen, and who is this and where are you logging from? Do let me know. So the topic for today, it is very much clear, but I'm just going to tell you what I mean to talk about. But if you have any idea regarding the topic or what you think, what you presume I intend to talk about, you can just let me know in the comment box. Okay. So okay, so this topic, um, like there are so many interpretations regarding this topic, but earlier I was reading a quote, and it's basically based on that quote. I won't repeat the quote, but instead what I'll do is I'll explain this, like what the quote means. So अगर हम जो अपनी ज़िंदगी में देखें, रोज़ाना की लाइफ में देखें, तो every day we come across so many views, we look at things, uh, we look at so many things. So basically what I want to talk about, it's about perceptions, it's about perspective. So every now and then we have different perspectives about different things. So it all depends how we are looking at those things. So firstly जो है, like there are certain things which I'm going to cover in perspective, and then I'm going to tell you, and in fact ये जो चीज़ें होंगी, you yourself are going to be in that position to analyze that this is what happens in reality. And there's so much, it's so much common, it's the day to day life things. You just need an insight, you just need a keen observation to understand what is perception, or how you can view things. Like अगर perspectives की बात की जाए, Jan Muhammad, thank you so much for joining and watching. Zamir Udhani, thank you so much for joining and watching. So अगर पर्सपेक्टिव की बात की जाए, तो पर्सपेक्टिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट मैटर्स अ लॉट. लाइक देयर आर मेनी टाइम्स विच, जिसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कि everyone has a different angle, yeah, different vision, yeah, different perception about looking at things. Like if I'm looking at a thing, I might view that thing with a different perception, या with a different perspective. अगर इसको आप जो है इस तरीके से देख लें कि like when I go for vlogging या I go for morning walk, तो जो नेचर है उसको मैं अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रही हूँ, और उससे जो मुझे फील आ रही है, द वे इट्स इंस्पायरिंग मी, या शायद फ्लावर्स को देखकर जो मैं फील कर रही हूँ, हो सकता है कि अगर आप लोग नेचर में हो तो आप लोग उस तरीके से फील ना कर सके. मे बी आपको वो नेचर जो है जस्ट नेचर लगे, बस आपको ये लगे कि भी ये तो घास भूस है, या ये तो दरख्त है, और ये तो बंजर दरख्त है, इसमें ऐसी क्या चीज़ है कि ये इनको जो है बहुत अच्छा लग रहा है. बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर परसेप्शन कि आप अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को किस तरीके से, किस निगाह से देख रही हैं. सो उसमें जो सबसे बड़ा कमाल होता है वो निगाह का होता है. हर एक की निगाह दूसरे से डिफरेंट होती है. सो पर्सपेक्टिव, द नंबर वन थिंग रिगार्डिंग परसेप्शन इज पर्सपेक्टिव मैटर्स अ लॉट. और हर एक इंसान का पर्सपेक्टिव दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है. कोई दो इंसान एक तरह नहीं सोच सकते, ना ही एक ही तरह से चीज़ों को देख सकते हैं. इसकी मैं आगे जाकर जो है आपको एक और चीज़ के लिहाज से एक्सप्लेन करती हूँ, और उसमें जो है मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी. जान मोहम्मद, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, आई होप यू आर फाइन एज वेल. सो जो पर्सपेक्टिव होते हैं, एक तो पर्सपेक्टिव होते हैं जो कि मैटर करता है. देन पर्सपेक्टिव के अगर हम मज़ीद आगे देखें, तो इससे आगे क्या आ जाता है, यू नीड टू हैव अ सेंस ऑफ डेप्थ ऑब्जर्वेशन. किसी में भी अगर इन डेप्थ ऑब्जर्वेशन हो, तो देन यू आर एबल टू एनालाइज डिफरेंट थिंग्स. अब वो आप जो है
लाइक जो ऑब्जर्वेशन होती है, जस्ट लुकिंग एट समथिंग, इट्स एन सुपरफिशियल ऑब्जर्वेशन। जबकि आपने जो है अगर पर्सपेक्टिव को एनालाइज करना है तो यू हैव टू लुक डीप बिलो द थिंग, सरफेस लेवल से आपने नीचे देखना होता है। अब आप इसमें आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। जिस तरीके से आप देखिए, अगर आप डायमंड देखते हैं, लाइक डायमंड को बज़ाहिर कोई भी अगर जो सुपरफिशियल लिहाज से देखे तो इट्स अपने क्रूड फॉर्म में इट्स जस्ट अ रॉक। बट देन अगर जो है, if you have that capability of deeply analyzing and deeply observing a stone, like if you are a gemologist, अगर आप जेम्स की स्टडी करते हैं और आप जो है किसी पत्थर को उठाकर देखते हैं, तो बीइंग अ gemologist you are going to look at the beauty of that stone rather than looking at the superficial level. what you are going to do is आप उसके अंदर तक जो है जाकर उसकी वैल्यू जो है देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसके फीचर्स देखेंगे, उसके केमिकल कॉम्पोजिशन देखेंगे, ना कि आप उसको सुपरफिशियल लेवल पे देखकर, सरफेस पे देखकर कहेंगे भाई ये तो पत्थर है, इसमें ऐसी क्या चीज़ है। सो सिमिलरली जो डेप्थ ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो भी हमें यही सिखाती है कि भाई आपने चीज़ों को ऑन द सरफेस लेवल नहीं देखना होता या स्टडी नहीं करना होता, आपने इन डेप्थ जाकर उनको स्टडी करना होता है। So this is how your perception and your perspective comes in. कि when you start looking at things from a deeper point of view या deeper understanding से आप देखने की कोशिश कर रहे होती है, and you know it does not only apply to stones or anything else, या कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की जो है मैं बात कर रही हूँ, उस पर नहीं आपने सिर्फ अप्लाई करना होता है, बल्कि अगर आप लिविंग बींग्स की भी बात करें, ह्यूमंस को भी अगर आप देखें, तो उनमें भी यू हैव टू लुक डीप बिलो द सरफेस। सिर्फ आपने जो है आउटर सरफेस नहीं देखना होता, ये नहीं देखना होता कि इसकी क्या शक्ल सूरत है, किसी का क्या कद है, क्या रंग है, बट रादर यू हैव टू एनालाइज द पर्सन इन साइड आउट। उसके अंदर की क्या कैपेबिलिटीज़ है, उसका क्या करेक्टर है, उसके क्या जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उसकी क्या जो है स्किल्स हैं, व्हाट मेक्स दैट पर्सन यूनिक, व्हाट मेक्स दैट पर्सन स्पेशल, ये चीज़ें आपने स्टडी करनी होती है। एंड फॉर दैट यू नीड टू हैव अ डीप ऑब्जर्वेशन। ओके, लेट मी टेक सम कमेंट्स। इट्स गासुर रहमान, वालेकुम अस्सलाम, आई होप यू आर फाइन, आई एम फाइन टू। अच्छा, देन अलीशा, yes, you are saying simplicity is the best part of beauty. Yes, you are very much right. And Ghasur Rahman, thank you for your compliment as well. And Fakhri Alam, you're saying means how I take things according to my sense. Yes, perception is, this is exactly what I'm saying, कि हर एक इंसान की जो perception है या perspective है, it differs from the other person. Like फाखरी आलम, जिस तरीके से आप जो है perceive कर रहे हैं, कोई दूसरा इंसान उस तरीके से परसीव नहीं कर रहा होता। सो हर एक की परसेप्शन डिफर करती है, बट देन परसेप्शन को जो है आपने, you always have to look towards the positive side of things rather than focusing on negative things. क्योंकि अगर आपका ट्रेंड जो है नेगेटिव साइड पे होगा या आपका बेंट नेगेटिव साइड पे होगा, तो आपको चीज़ें भी वैसी नजर आएंगी। लाइक इफ यू आर गोइंग टू थिंक taking a stone and you're just going to consider it's just a stone and there's nothing beautiful in it, so then that is a negative bent, negative mindset. So पत्थर बेशक पत्थर है, पर एटलीस्ट उसकी खूबसूरती देखने की कोशिश करें ना। लाइक इफ आई पिक अप अ रॉक, चाहे वो स्ट्रीम में हो या चाहे किसी रोड साइड पे पड़ा हो, तो मैं उसको उठाकर जो है उसकी खसूसियात देखने की कोशिश करूँगी, उसको जो है देखूंगी कि भाई अल्लाह मियाँ ने उसे किस तरीके से जो है बनाया हुआ है, उसके क्या कट्स हैं, और इज़ इट इवन अगर कोई ऑर्डिनरी पत्थर भी हो, तो आप उठाकर उसको जो है टेक्सचर फील करते हो, आप उसकी शेप देखते हो, उसके कलर्स देखते हो, आप उसको इन डेप्थ देखने की कोशिश करते हो कि व्हाट स्पेशल अबाउट दिस पत्थर। क्योंकि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज़ अ मीनिंग, एवरीथिंग इज क्रिएटेड विद सम इंसेंटिव, कुछ ना कुछ उसमें खूबसूरती होती है। सिमिलरली द सेम इज़ द केस विद द ह्यूमंस, कि एवरी पर्सन हैज़ अ मीनिंग इन दिस वर्ल्ड, हर एक का एक पर्पज़ है, एंड एवरी वन इज स्ट्रगलिंग टू अचीव दैट पर्पज़, टू फाइंड वन सेल्फ इन दिस वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड ऑफ रियलिटी। सो एवरी वन हैज़ अ रोल टू प्ले। वो रोल क्या है, किस तरीके से अचीव होगा, सो एवरी वन इज स्ट्रगलिंग and transforming within themselves to find the meaning of their being in this world. So this is another thing, depth of observation. Hamad Ali Khan, thank you so much for joining and watching, and this is who
Ahmad Azhar, thank you so much for joining and watching this session. अच्छा, फिर डेप्थ ऑफ ऑब्जर्वेशन के बाद वी गो बियॉन्ड कि यू हैव टू सी बियॉन्ड द सरफेस. सरफेस मीनिंग लाइक एवरीवन. अब अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस को डोंट परसीव ह्यूमंस एज जस्ट अ ह्यूमन. ट्राई टू लुक बीनीथ. जिस तरह हम कहते हैं ना रीड बिटवीन लाइन्स, इसी तरीके से जो ह्यूमंस होती हैं, रीडिंग ह्यूमंस इट्स वेरी डिफिकल्ट. आई वोंट से कि भाई आप जिससे भी मिलें आप उसको जो है रीड करना शुरू कर दें. फर्स्ट गो में यू कैन नॉट रीड पीपल, यू नीड टू टॉक टू देम, यू नीड टू कम्युनिकेट विद देम. बट येस, जो बंदा जो है या बंदी जैसे होंगे वो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपको समझ आने शुरू हो जाएंगे. बाज़ लोग दे आर सो ट्रांसपेरेंट, सो द बेस्ट ह्यूमन इज़ हु इज़ ट्रांसपेरेंट, जिनसे आप बात करते हैं एंड यू कैन रीड देम इन एंड आउट. Read them in and out, you can understand their nature, you know how transparent they are, they're not deceptive, they're not cunning, they are not manipulative. So जो इस किस्म के ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके साथ आपको जो है इंटरेक्ट करके भी अच्छा लगता है एंड यू कैन कन्वर्स वेरी इजली विद देम. बट देन देयर आर सर्टेन ह्यूमन बींग्स जिनके साथ आप कन्वर्स करते हो और एट द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन आपका अपना ही दिल बोझल हो जाता है कि भाई वाई डिड आई टॉक टू दिस पर्सन या वाई डिड आई टॉक टू दिस गर्ल. तो यह है कि यू हैव टू ट्राई नॉट टू रीड पीपल टू मच, क्योंकि एट टाइम्स you are not able to assess people, क्योंकि human beings they are very complex. So I would always suggest कि भाई don't try to read people, just have a good conversation with them. And if अगर आपको लगे कि भाई the person is worth communicating with, then you can communicate with them. Otherwise जो है अगर आपको negative vibes आएँ या कुछ भी आपको जो है लगे कि सही नहीं है तो don't communicate. So you have to see beyond the surface, and this applies to everything in your life, चाहे वो human beings हो, चाहे वो work हो. Like nowadays many people think कि online जो है बहुत ज़्यादा scams होते हैं, और होते भी हैं, I won't say कि नहीं होते. But then again you have to read between the lines. Like if you are getting some kind of like आप देख रहे कि बहुत से courses आते हैं, online courses आते हैं, and everything is so positive and everything is fine. But then as soon as you click on the contact button और आप जो है contact करते हैं, then you come to know कि भाई जो दिखाया जा रहा है वो नहीं है और अंदर उसके कुछ और ही है. So for that reason you have to see beyond the surface. हर एक अच्छी चीज़ जो है अच्छी नहीं होती और हर एक गंदी चीज़ भी गंदी नहीं होती. So there are always exceptions, but try to see beyond the surface. Okay, Lupna Pracha, thank you so much for joining and watching. And okay, this looks someone from my brotherly. Okay. So mindfulness and awareness, this is also a very important thing. You have to be very mindful and aware. और अगेन जो आपका पर्सपेक्टिव होता है या आपकी जो परसेप्शंस होती हैं अबाउट डिफरेंट थिंग्स, ये आपको सिखाती हैं हाउ यू नीड टू बी अवेयर ऑफ डिफरेंट थिंग्स एंड हाउ यू नीड टू बी माइंडफुल. क्योंकि अगर आप माइंडफुल नहीं होंगे, अगर आप अवेयर नहीं होंगे, तो देन यू माइट फॉल इनटू सम काइंड ऑफ ट्रैप्स. Now these traps are again related with ऑनलाइन अर्निंग या ऑनलाइन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो आपको कहते हैं कि भी ओके वी आर गोइंग टू टीच यू सो एंड सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. क्योंकि हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जहाँ से आप जो है लर्न कर सकते हैं, एंड नॉट एवरी पर्सन इज़ द राइट पर्सन जहाँ जिनसे आप लर्न कर सकते हैं. सो ऑलवेज गो फॉर authenticated platforms. Like I would always suggest कि भाई अगर आप कुछ है, if you know about a person, like if you come to me for communication skills or for English language, तो you would be knowing my authenticity, sorry. So वो authenticity आपको किस तरीके से मिलती है when you go into profiles of people, when you search up their professional links, when you go to their websites, when you talk to people, या आप testimonials जो है read करते हैं, कि this person is authentic and we can go to this person. And then there are other platforms जिनको आप use कर सकते हैं. There is Coursera, there is Google certifications बहुत ज़्यादा है. Then you can search on Udemy, उसमें भी आपको बहुत courses मिल जाते हैं. So these are all authenticated platforms जहाँ से आप कुछ ना कुछ learn कर सकते हैं. But then again there are many people who are on YouTube and they are good gurus as well. So उन mentors से भी आप learn कर सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से related हो या कहीं और से related हो, इंडिया से हो,
या किसी यूरोपियन कंट्री से हो, so you can always log into those subscribers, subscribe to their channels and learn something from them. Okay, Shaikh Fakir Muhammad, thank you so much for joining and watching this session. And so you have to be mindful and you have to be aware. तो यहाँ पर जो है ना, आपके जो perspective और जो आपकी perception है वो बहुत matter करती है कि how much aware you are about the different thing या different trends those are going on. अच्छा, देन उसमें जो है अगेन एक और जो इसमें चीज़ आ जाती है, यू नीड टू फाइंड मीनिंग. अब वो मीनिंग आप जो है किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं? वो मीनिंग आप इसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि व्हाट वी रिफ्लेक्ट, इट्स आवर वैल्यूज़, और हमारी जो वैल्यूज़ हैं दे आर फुल ऑफ मीनिंग. और जो हमारी वैल्यूज़ हैं, एथिक्स हैं, दैट हैज़ टू रिफ्लेक्ट इन वट एवर वी आर सेइंग और वट एवर वी आर डूइंग. लाइक इस तरीके से नहीं हो सकता कि भाई आपकी जो है ज़ुबान एक बात कर रही हो पर आपकी आंखें टोटली डिफरेंट बात कर रही हो, या आपकी बॉडी लैंग्वेज टोटली एक डिफरेंट ही सिनेरियो बयान कर रही हो. सो वट एवर यू आर डूइंग, चाहे आपकी बॉडी लैंग्वेज है, चाहे आपके जो है ज़ुबान है, चाहे आपकी कम्युनिकेशन है, चाहे आपकी आइज़ है, एवरीथिंग शुड बी अलाइन विद ईच एंड अदर. सो अलग अलग से जो है ये नहीं कि अलग अलग से जो है ना सारे जो ऑर्गन्स हैं वो बातचीत कर रहे हों. नाउ दिस यू विल अंडरस्टैंड इन द कॉन्टेक्स्ट इफ you have this habit of observing people. Like if you observe people, if you look into their eyes might say something else, but if you look overall to their body language, it might say something else. So most of the time the body language, it's the right thing which is communicating. So that's why ये साइकोलॉजिकली जो है जो साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा स्टडी करती है, दे नो दिस कि भाई इट्स द बॉडी लैंग्वेज जिससे आप जो है अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं कि व्हाट द पर्सन इंटेंड्स टू से और व्हाट ही और शी इज सेइंग. सो बट डोंट गो इनटू दीज निटी ग्रिटीज. बस ये है कि ट्राई टू फाइंड वैल्यूज़ एंड मीनिंग्स. जो आपकी वैल्यूज़ हैं, जो आपके गोल्स हैं, इट शुड अलाइन विद ईच एंड अदर. इस तरह नहीं होना चाहिए कि ज़ुबान से आप कुछ और कह रहे हो, बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही हो. सो एवरीथिंग हैज़ टू बी अलाइन. सो जब उसमें हार्मनी होगी तो ऑटोमेटिकली व्हाट यू आर गोइंग टू से, इट्स गोइंग टू बी ऑथेंटिक. Alicia, you're saying, yes, I agreed. Many types work of making fraud or blackmailing, other kinds of trapping work. Who makes disheartened for joining any good type of work, like for own benefit. Yes, that is pretty much true regarding online platforms. But then again, देखें अल्लाह मियाँ ने इंसान को क्यों मुख्तलिफ बनाया है या क्यों अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया है? क्योंकि इंसान हैज़ द पावर ऑफ थिंकिंग एंड एनालाइजिंग. सो ये जो अल्लाह ने जो है सर के ऊपर जो है एक दिमाग रखा हुआ है, वो इसलिए रखा हुआ है कि उसको खोलें, उसमें जो नॉलेज है उसको निकालें, जो अक्ल है उसको इस्तेमाल करें. ट्राई टू रीड बिटवीन लाइंस. कोई चीज़ अगर बहुत अच्छे तरीके से पेश की जा रही है, ट्राई टू एनालाइज वो जो डेप्थनेस है या वो जो डेप्थ ऑफ ऑब्जर्वेशन है. ट्राई टू यूज़ दैट, अपनी अकल को यूज़ करें एंड यू विल ईजिली अंडरस्टैंड कि व्हाट द अदर पर्सन मीन्स, या जो है उसमें कितने फेक है या कितने जो है रियलिटी है. सो यू हैव टू लुक एट दीज थिंग्स. लाइक अब मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अर्लियर व्हेन आई जॉइन टिकटॉक, तो उस टाइम पे मुझे जो है यानी आई टू was deceived many times by fake scams and these and that. But then when I started studying that platform and I started watching different videos and started seeing कि भाई इसका जो है मकसद क्या है. Now TikTok, it's basically जो यहाँ हमारे यहाँ पे यूज़ करते हैं, it's used more as an advertising platform. अब एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म इन द सेंस कि लाइक पीपल आर ओवर देयर, वो जो है किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करे होंगे एज एन एफिलिएट मार्केटर, या फिर ये है कि वो किसी का जो है एकेडमिक प्लेटफॉर्म है उसका जो है वो उसकी प्रमोशन करे होंगे कि ओके भाई इस प्लेटफॉर्म पे हमने इतने कमा लिए, ये कर लिया, तो लिंक बायो में है. अच्छा, वंस यू स्टार्ट गोइंग इन द बायो में ना कोई लिंक होता है ना कोई नंबर होता है. सो दैट्स प्रीटी मच अ स्कैम. बट देन उनके जो मकसद होता है कि जिस अकेडमी को उन्होंने प्रमोट करना होता है वो अपनी जो है वो कैंपेन में कर देते हैं. सो इट्स मोर ऑफ एन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म जो यहाँ पे यूज़ होता है. बट येस, अब्रॉड इट्स यूज फॉर मच मोर थिंग्स. लाइक TikTok, basically it's I guess it's a Korean platform, or
आई गेस इधर से ही है इसके जो बैकग्राउंड है ना, क्योंकि उसमें जो है जो लोग हैं दे आर द राइट काइंड ऑफ एफिलिएट मार्केटर्स, और उन्होंने उसको दे आर यूजिंग दैट प्लेटफॉर्म फॉर एडवर्टाइजिंग, टोटली एडवर्टाइजिंग। उसमें अगर शॉप्स हैं तो शॉप्स में भी जो है एडवर्टीजमेंट हो रही है, प्रोडक्ट्स हैं उसकी भी एडवर्टीजमेंट हो रही है, एंड इट्स लाइक जिस तरीके से हमारे यहाँ पर शॉप्स होती है ना, या जिस तरीके से आप कह लें एग्जीबिशन होता है, एग्जीबिशन में डिफरेंट शॉप्स होती हैं, इसी तरीके से जो टिकटॉक है, इट्स टिकटॉक में जो है डिफरेंट ब्रांड्स हैं, डिफरेंट जो है इन्फ्लुएंसर्स हैं, और उन इन्फ्लुएंसर्स ने वो कभी एक का ब्रांड जो है प्रमोट करें, कभी दूसरे का ब्रांड प्रमोट कर रही हैं, एंड दैट्स समथिंग विच इज़ गोइंग ऑन लाइव। और लाइव जो है वो ब्रांड प्रमोट कर रही हैं, साथ ही उनका शॉप का जो है आइकॉन है, तो जो ब्रांड को देख रहा है उसके प्रमोशन देख रहा है, वो साथ ही जो है शॉप के बटन पे क्लिक कर रहा है या प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहा है, एंड देन दे आर गोइंग टू दैट साइड जहाँ से वो परचेज कर सकती हैं। बट हेयर इन पाकिस्तान टिकटॉक इट्स नॉट बीइंग यूज्ड फॉर द पॉजिटिव थिंग्स। तो यहाँ पर जिस तरीके से और जिन चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा है दैट इज़ नॉट ऑथेंटिक, दैट इज़ नॉट द काइंड ऑफ थिंग्स कि वी एज एडल्ट्स वुड वांट टू सी, या जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं हु आर वर्किंग ऑन द राइट काइंड ऑफ कंटेंट, या जो लोगों को की फलाह बहबूद के लिए काम करें, दे वोंट लाइक टू सी सच कंटेंट ऑन टिकटॉक which is being used here in Pakistan. So यही वजह है कि earlier जो है TikTok was easily monetized in Pakistan, and there was not an objection कि भाई पाकिस्तान से monetize नहीं हो सकता. But now TikTok, if you have a US account, if you have a US number और आपका account वहाँ से बना हुआ है, only then it can be monetized. But they are very intelligent people, they know कि भाई यहाँ पर किस किस किस्म के frauds होते हैं. तो इस वजह से जो है ना वो प्लेटफॉर्म बैन हो गया है, और वो पाकिस्तान के लिए मोनेटाइजेशन ओपन नहीं है उस पर. बट देन अगेन अगर जो है टिकटॉक पे नहीं है तो वी स्टिल हैव यूट्यूब. बट ये है कि अगर जो है यूट्यूब पे भी इसी तरीके की मकारियाँ चलती रहीं जिस तरह टिकटॉक पे चलती रही हैं, या इसी किस्म का जो है कंटेंट डलता रहा, या इसी किस्म की दो नंबरियाँ होती रहीं, तो देन अ टाइम विल कम जब यूट्यूब ही यहाँ पर बैन हो जाएगा. सो लेट्स होप कि वो काम ना हो. बट ये है कि यू हैव टू बी अवेयर, यू हैव टू यूज़ योर माइंड, एंड यू हैव टू यूज़ थिंग्स इन द राइट कॉन्टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ उसको टोटली गलत चीज़ों के लिए यूज़ किया जाए. अच्छा जी, अलीशा यू आर सेइंग यू फील आई लुक टायर्ड टुडे. Okay, yeah, maybe I might be tired. उसकी reason ये है कि I get up very early in the morning, around 6 o'clock, and then my day starts from my walk, the vlog, and then all day long I have to, do certain study things, and I have to do other things as well. So अभी इस time तक जो है, yes, I am pretty tired, but then it's okay. I think it's still not reflecting, but अगर reflect भी हो रही है तो it's very much human. I'm a human as well, so I'm not a robot. So that's the authenticity I can give कि भाई right across this camera there's a human sitting. It's not a robot, so it's human. Sakib Abasi, thank you so much for joining. Okay, Alisha, you're saying TikTok now people using for advertising, own business, or different types of work promoting. टिकटॉक यहाँ पाकिस्तान में जो लोग टिकटॉक यूज़ कर रही है, दे आर promoting, some are promoting their own businesses, some are using it as affiliate influencers, they are promoting other brands, and then there are certain other people who are using TikTok to make rubbish content, जिसको देखकर जो है आपके बच्चे ख़राब होते हैं, यूथ ख़राब होती है, कुछ नौजवान कुछ बूढ़े वो भी ख़राब होते हैं क्योंकि ऑल डे लॉन्ग दे आर स्क्रॉलिंग. So it's becoming more like an addiction. So you have to get away from this addiction. You have to use जो भी platforms हैं, use it for positive purposes. Use to create content जो कि लोगों को help करे. Like even if you are promoting people's businesses, still वो business ऐसा हो कि someone can click on the link and in the bio, and they can get the number of those people, and they can get in touch with those people, rather than कि भाई उनका जो है टाइम ज़ाया हो जाए, इतनी देर टिकटॉक पे भी लगाएं और एट दी एंड जो है ना कोई नंबर आए, ना कोई बायो में कोई जो है लिंक आए, एंड
their time is wasted. So other than TikTok, what you can do is you can always go to YouTube पे जो है different जो है mentors हैं जिनके अच्छे सब्सक्रिप्शंस हैं, सब्सक्राइबर्स हैं. सो गो ऑन टू द प्लेटफॉर्म एंड वट एवर यू वॉन्ट टू लर्न. यूट्यूब इट्स द बेस्ट यूनिवर्सिटी. यूट्यूब हो गया, कोर्सीरा हो गया, यूटीमी हो गया. यू कैन लर्न फ्रॉम दीज प्लेटफॉर्म्स. लिंक्डइन हो गया. गो एंड सर्च फॉर कोर्सेज एंड लर्न फ्रॉम हेयर. एंड बेस्ट थिंग इज दीज आर ऑल फ्री प्लेटफॉर्म्स. तो बजाय कि आप जो है लोगों के पीछे भागें, उनको पैसे दें और गलत लोगों से जो है चीज़ें सीखें और फिर वो आगे काम भी ना आए, तो ये जो ऑथेंटिकेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं इनसे जाएं, इनसे सीखें. जो मार्केट में जो है in a couple of days I would be talking about skills which you can do, which are very important in nowadays in 2024. और अगर आप वो skills gauge करते हैं तो you can earn easily in thousands of dollars at the comfort of your home. So I won't say कि भाई आप जो है ये कर लेंगे तो फ़ौरन ही आपको जो है पैसे आना शुरू कर देंगे. बट येस आई विल टेल यू कि भाई अगर आप ये स्किल्स करेंगे, क्योंकि व्हेन यू आर डूइंग कोर्सेज ऑन कोर्सेरा, अब अगर आप उनका कोई भी कोर्स करते हैं, से इफ़ यू डूइंग डिजिटल मार्केटिंग, आई टेक द एग्जांपल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. अब जस्ट डिजिटल मार्केटिंग अगर यहाँ पर आप करते हैं डिजिटल स्किल्स से, तो वो आपको कराएंगे 2 मंथ्स में. उस 2 मंथ्स में वो आपको बेसिक्स बताएंगे. सो उस बेसिक्स पे जो है आप जो है काम नहीं पकड़ सकते, क्योंकि दोज आर वेरी बेसिक्स. बट देन इफ़ यू गो ऑन कोर्सेरा और वहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग पड़ी हुई है, कोर्स उसका पड़ा हुआ है, तो व्हाट दे आर गोइंग टू टीच यू, दे हैव 6 to 7 मॉड्यूल्स. और ईच मॉड्यूल में जो है देयर आर 4 मॉड्यूल्स. एंड इट टेक्स टू कंप्लीट, अगर इफ़ यू आर अ वर्किंग पर्सन एंड यू हैव अदर थिंग्स टू डू, you will take roughly 1 month to complete one course जिसमें 4 modules होंगे. And it depends on your pace. आपके पास दिन में 1 घंटा है, 2 घंटे हैं, you can do it on your own pace. So practically कोर्सेरा पे जो भी आप कोर्स करेंगे उसमें आपको प्रोफेशनली तौर पे, if you're doing professional, तो आपको तकरीबन 6 to 7 months लग जाएंगे. एंड देन 6 to 7 months में ये नहीं है कि आप पहले कोर्स करो फिर आप उसे प्रैक्टिस करो. जो आप जो है कोर्स पकड़ते हो उसको साथ के साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर दो. चाहे आपकी वेबसाइट है, आपके फ्रेंड की वेबसाइट है, या किसी की भी है, यू हैव टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो. या लोगों की वेबसाइट पकड़ के उस पर काम करना शुरू कर दो. जब आप काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आप उसमें गुरु बनते जाएंगे, हैंड्स ऑन एक्सपर्टीज हो जाएंगे. सो इस तरीके से नहीं होगा कि भाई आपने जो है 6-7 महीने बाद मार्केट में निकल रहे हो काम के लिए, तो उस टाइम पे जो है लोग आपसे पूछ रहे हैं हाँ जी पोर्टफोलियो कहाँ है, किस के साइट पे काम किया, किसी की काम किया भी है या नहीं किया, या यू स्टूप टू बिलो, या आप कहें कि हाँ जी अभी तो मैंने जो है ना काम किया है ना मुझे कोई एक्सपीरियंस है तो मुझे फ्री में रख लें. फ्री वाले काम नहीं करने. देखो आप कम पैसों पे काम शुरू कर दो बट फ्री में ना करो, क्योंकि जब आप फ्री में करते हो ना तो पीपल स्टार्ट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड. पीपल थिंक कि भाई आपके पास कोई काम नहीं है या आपको काम नहीं आता, तो इसलिए वो आपसे फ्री में काम कराते हैं. एंड देन वो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि अच्छा भाई बंदा नीडी है, इसको काम की ज़रूरत है, तो भाई चलो भाई आप हमारे इस पे काम करना शुरू कर दो. और वो आपको इतनी लो कॉस्ट जो है देंगे कि आप जो है ना, यानी आपकी ईगो टूटेगी, इंटेग्रिटी जो है ना बहुत ज़्यादा डाउन चली जाएगी. सो इफ़ यू वांट टू वर्क विद पीपल जिनकी ऑर्गेनाइजेशंस का आपको पता हो कि दे दे रिस्पेक्ट यू एज अ पर्सन, दे रिस्पेक्ट योर वर्क, और वो कदर करते हैं मेहनती लोगों की. सो जो ऑर्गेनाइजेशंस मेहनती लोगों की कदर करती हैं वो उनको फिर पे भी करती हैं. अब आप यूएन को देख लें, वो जब भी इंटर्नशिप्स करवाती हैं, देयर इंटर्नशिप्स आर पेड. यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान में ज़रा ये इश्यूज़ हैं कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपसे कोई काम कराती है ना तो वो आपको पे नहीं करते. वो कहते हैं कि भाई हमें फ्री में जो है ना सब कुछ मिल जाए. So you have to, keep these things in mind. Rana, Amir, thank you so much for joining and watching. Acha, Alisha, you are saying, I telling you about here in abroad, but in Pakistan using very negative videos or other things. Yes, in Pakistan, TikTok is not being used in the right sense, but then there are always people like, I won't talk about anyone else. I know when I'm creating vlogs on TikTok, they are very meaningful. जिस तरीके से यहाँ पर लाइव सेशन में मैं आपको जो है कुछ ना कुछ जो है मीनिंगफुल चीज़ जो है बता रही होती हूँ. सिमिलरली इफ़ यू गो ऑन माई टिकटॉक, तो वहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ जो है ना
मोटिवेशनल कोट्स या नेचर जो है इसके हवाले से कुछ ना कुछ मिल जाता है, बट दोज आर ऑल एडिंग वैल्यू टू योर लाइफ. So you can always even while you're scrolling you can come up with different people जिनके जो है कंटेंट में कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है कि आपको देखकर खुशी होती है. Okay, so now coming back to my topic. Now I'm going to tell you about interpretation and subjectivity. Again देखें इसमें perception आ जाती है कि हर एक की perception differ करती है when it comes to interpreting different things, चाहे वो subjective interpretation हो या चाहे वो objective interpretation हो. So every person has a different perception when they are looking at things. Taimur Hassan, thank you so much for joining and watching this session. So you need to understand whatever lies underneath, whether it's subjective, whether it's objective, and you need to appreciate the diversity of different perceptions of different people, no matter whatever their perceptions are. हो सकता है किसी की perception बहुत negative हो, आपकी perception बहुत positive हो, but then when different people come together they share different different mindsets, different objectives, different opinions, rather than differing from them, yeah, saying कि भाई you are wrong and I am right, just try to listen. क्योंकि देखिए when you are listening to people, हो सकता है कि अगर किसी की जो है नेगेटिव माइंडसेट है या उनके डिफरेंट ओपिनियंस है, दे माइट कम अप विद सम काइंड ऑफ सोल्यूशन जो कि शायद आपके पास ना हो. यू बीइंग वेरी ऑब्जेक्टिव और वेरी पॉजिटिव, you might not be able to look at things the way the other person is looking. So don't think that whatever you are saying is right and whatever the other person is saying is wrong. So just try to come up to a common ground. So एक ऐसा ग्राउंड जिस पे जो है आप दोनों जो है एग्री कर सकें, एंड दैट इज़ हाउ यू इंक्लूड पीपल एंड दैट इज़ हाउ यू अप्रिशिएट डाइवर्सिटी. सो रादर देन कि डाइवर्सिटी से आप लोग डरें या उससे भाग जाएं या ये सोचें कि भाई नहीं वी कांट कम ऑन अ कॉमन ग्राउंड, यू हैव टू फाइंड कॉमन ग्राउंड्स. क्योंकि आप देखें ग्लोबली भी हम अगर देखें तो जहाँ पर कॉमन ग्राउंड होते हैं वहीं पर जो है भी बात बनती है, और जहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है वहाँ पर सॉल्यूशंस निकालना ज़रा कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाते हैं. रईस नसीबुल्ला, व्हाट आर यू सेइंग? एओ अच्छा, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आप भी जान कैसी हैं और घर में सब ठीक ठाक हैं? मेरी बहन खुश रहो. ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स. एंड यस, घर में सब ठीक ठाक है एंड आप भी जान इज़ फाइन. थैंक यू. ओके, नाउ this was regarding inclusivity and appreciating diversity. अच्छा, then we need to apply different perceptions in our daily lives. अब daily life में जो है इस तरीके से नहीं हो सकता कि you are thinking all positive things and you're not thinking anything negative. तो नेगेटिविटी भी साथ के साथ आ जाती है. You have to analyze, क्योंकि it's not if you're just going to think all positive तो उससे भी आपकी जो है बात नहीं बनेगी. So you have to consider the negative aspects as well, or you have to inculcate both things, both ideas, चाहे positive हो चाहे negative हो, into your life according to the situation. And you have to keep on applying things rather than just जिस तरह कुछ चीज़ें होती हैं ना जो आप कहते हैं कि भाई ये थ्योरी में तो बहुत अच्छी लगती हैं बट प्रैक्टिस में ये अच्छी नहीं है. So you have to try to analyze and try to apply. जिस तरीके से बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं या मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स हैं जो अर्ली इन लाइफ पढ़ते हैं और हम ये सोचते हैं कि भाई ये प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ काम आएंगे, वाई आर वी इवन स्टडिंग दैम, इट्स बोगस, इट्स यूजलेस. बट व्हेन यू गेट इनटू द प्रैक्टिकल लाइफ देन यू नो कि वो आपको कॉन्सेप्ट्स कहाँ पर काम आ रहे होते हैं. लाइक इन मैथ्स व्हेन वी स्टडी इक्वेशंस, या जब हम जो शेप्स स्टडी कर रहे होते हैं तो एट दैट टाइम तो जो है शेप्स की समझ नहीं आती कि भाई ये क्या शेप्स हैं, ये कौन कौन से नाम है. पर व्हेन यू गेट इनटू प्रैक्टिकल लाइफ, लाइक इफ आई टॉक अबाउट आर्टिस्ट, so you find the whole world it's surrounded by shapes. अगर if you just take a flower, एक फ्लावर में कितनी शेप्स होती हैं. लाइक द अदर डे आई वाज कैप्चरिंग दीज स्मॉल फ्लावर्स, डेजी के साथ जो पॉपीज थे, एंड आई स्टडीड द इंट्रिकेट स्ट्रक्चर ऑफ पॉपी. और पॉपी का जिस तरीके से मंडेला के जो है डिज़ाइंस होते हैं जो स्पायरोक्राफ्ट से बनते हैं, जो पॉपी था उसमें खुद जो है ना वो इंट्रिकेट डिज़ाइंस थे.
जस्ट एज जिस तरीके से स्पायरोग्राफ से बनते हैं. सो व्हेन आप जब जो है यानी शेप्स को स्टडी करते हैं तो यू फाइंड सो मच इंट्रिकेसी इन नेचर, जो कि बज़ाहिर आप जो है एज अ ह्यूमन आप शायद जो है उसको सरफेस लेवल पे देख रहे हो, बट वंस यू स्टार्ट स्टडिंग द डेप्थ और आप बिलो सरफेस लेवल जाते हो तो देन यू स्टडी कि भाई नेचर में किस कदर इंट्रिकेसी है. सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि यू नीड टू यू नो though you have a different perspective about things but you need to have that in depth study, और वो जो in depth observation है that you have to apply to daily life. So this is how you're applying कि आप जो है स्टडी कर रहे हैं कि भाई नेचर में जो हर चीज़ है, जो फ्लावर है उसकी जो है क्या इंट्रिकेसी और किस कदर खूबसूरती से जो है ना अल्लाह ने ये चीज़ें क्रिएट की हुई हैं. Alicia, you're saying, but some people making positive on TikTok, on social media, like you, and people also doing good work and motivational lecture, and we can learn positive thinking and doing good on and others. Yes, you're right. You're very much right. कि yes, जिस तरीके से मैं आपको कह रही हूँ कि भाई every kind of person exists, even on social platforms, even on TikTok. Like जिस तरह जो है, thank you for your compliment कि I am trying to put in my share, and that's giving back to the community whatever I have learned over the years, or whatever essences I can share with people regarding life, regarding professional insights. That's what I am doing. So TikTok पे जो है, I won't say सारे लोग बुरे हैं, सारे लोग अच्छे भी नहीं हैं, but then you have to, अल्लाह मियाँ ने जो अक्ल दी है वो इसलिए दी है कि when you are scrolling through the social platform you should be aware कि भाई वो कौन सा कंटेंट है जो आपने एब्जॉर्ब करना है और कौन सा कंटेंट है जो आपने फ्लश आउट कर देना है. अब फ्लश आउट के लिए जो है लाइक व्हेन यू नो गो टू स्लीप एट नाइट, सो व्हाट डू यू डू, हमारा जो ब्रेन है व्हाट डज इट डू, it flushes out everything negative, whatever negative we have come across during the day, वो उसको फ्लश आउट कर देता है. सो हमारे माइंड में सिर्फ वही चीज़ रह जाती है विच इज़ पॉजिटिव, विच इज़ प्रोडक्टिव, एंड दैट्स what we remember. So similarly the same is with social platforms. Try to do not go through the negative things on different accounts, चाहे वो TikTok है या Facebook है या not YouTube, I won't say YouTube पे इस तरह है, but ये है कि you need to flush out those things from your mind. Don't think about them, don't go through them. What you can do is you can erase your search history, क्योंकि जो कुछ भी आप सर्च कर रहे होते हैं now this is again how datas are processing. आप अपने जो है कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म आप यूज़ करें, आप उसकी सेटिंग्स में जाएं, यू कैन ऑलवेज टर्न ऑफ दैट ऑप्शन जहाँ पर जो है डाटा कलेक्ट हो रहा होता है. उससे क्या आपका जो है फ़ायदा होगा, उससे ये फ़ायदा होगा कि यू वोंट बी सेइंग इरेलीवेंट थिंग्स, क्योंकि अगर आपने एक कोई इरेलीवेंट चीज़ सर्च की है तो देन ऑटोमेटिकली बैक एंड पे जो भी लोग जो है इस पे काम कर रहे होते हैं दे आर गोइंग टू स्टार्ट शोइंग यू द डाटा, क्योंकि उनको ये लगेगा कि भाई ये डाटा यू आर इंटरेस्टेड इन दैट थिंग. सो आपको ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड एड्स आने शुरू हो जाएंगे, उससे रिलेटेड पोस्ट आनी शुरू हो जाएगी, उससे रिलेटेड वीडियोज़ आने शुरू हो जाएंगे. So you can always switch off your search history and then try कि भाई साफ सुथरी चीज़ों को सर्च करें ताकि आपको जो है कोई ऐसा कंटेंट आए ही ना कि जो बाद में जो है आपको अपने जो है ना जहन से फ्लश आउट करना पड़े. फॉर एडल्ट्स इट्स नॉट डिफिकल्ट टू फ्लश आउट थिंग्स, बट फॉर यंग, for youngsters, for youth, it's quite difficult. So why have that curiosity of searching that thing in the first place? So always be careful when you're on social platforms. अच्छा जी, Alicia, you're saying Malik Ijaz, thank you so much for joining. And okay, Alicia, I think I have covered what you were saying. अच्छा, then एक और जो चीज़ परसेप्शंस में आ जाती है, यू नीड टू एम्ब्रेस चेंज एंड ग्रोथ. अब वो एम्ब्रेस चेंज इसी तरह होता है कि डोंट जस्ट ऑब्जर्व, try to analyze and then apply it to your life and try to see कि भाई वो चीज़ें अप्लाई करके आपके जो है लाइफ में कहाँ चेंज आया है, क्या आपके माइंड में कोई चेंज आया है या आपके माइंडसेट में वही चीज़ें थी जो पहले थी और अभी भी वैसे ही आप उसको अप्लाई कर रही हैं, या यू कैन सी सम काइंड ऑफ चेंज. अब जो चेंजेस होते हैं ना मोस्टली इट्स फॉर द पॉजिटिव. व्हेन यू लुक एट डिफरेंट थिंग्स लाइक in my day-to-day life when I'm browsing different skills या different courses में कर रही होती हूँ, तो I do see कि भाई वो जो कोर्स है प्रोवाइडेड मैंने वो कहाँ से किया है या किन लोगों से किया है,
what effect it's creating in my daily life, in my personal life, in my professional life, कहाँ पर मुझे उसका कोई फ़ायदा हो रहा है. And most of the time, 90% of the time, it's I really embrace that change, क्योंकि those things which I'm doing in my day to day life, those are helping me a lot, and they're turning me into a more refined person, into a more professional person, and the kind of professional जिसमें जो है I can help people के how they can shape their future when it comes to career, when it comes to learning a skill, या what they can apply in their daily lives. So these changes जो है ये आपको embrace भी करनी चाहिए, and it also helps in your growth overall. Okay, Alicia, you're saying that we are thinking and doing positive or negative because have both types here available, but I do and won't pick or choose what best or which kinds of benefit or success. Yes, you always have to go for the things which are best regarding success point of views, regarding professional point of view, regarding your personal grooming. So अगर जो है टिकटॉक पे if you pick up a channel जहाँ पर जो है focus is on how you can dress, like how you can dress in spending less, so that's the channel which you can pick up, and that's the content you can go through, क्योंकि उसमें जो है they are going to tell you different things कि भाई okay आपकी अगर जो है बॉडी टाइप इस टाइप की है, like if you are a गोल मटोल, what kind of clothes you should wear, या if you have a big face, what kind of earrings are going to look good on your face. But then again, if you are a male, then if you are like if you don't have a neck, like मोस्टली जो है मेन में मैं देखती हूँ कि जिनकी गर्दनें नहीं होती, दे लाइक टू वेयर बैंड कॉलर्स. अब अगर गर्दन नहीं है उसमें बैंड कॉलर पहनेंगे तो फिर क्या बनेगा? It won't look nice. So band collar always suit to men who have long necks, और जो जिनके necks नहीं हैं, they should always wear that coat collar. So these are some of the observations जो if you are an observant person तो आप कर सकते हैं. Similarly ख़वातीन में भी then there are certain prints that they should not wear, like if there's a person who wears गोल मटोल, then they should not wear flowery prints जिन पे बड़े बड़े flowers हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे उनकी गेट जो है और बेस्ट लगेगी, and they look more broader. So rather they should wear prints which are which do not have very big flowers, छोटे छोटे flowers हो, pattern flowers हो, या pattern कोई हो, या even just जो है simple colored हो, कोई solid color हो. So these are the things which you have to keep in mind. But then again, अगर आपने अपने सक्सेस या अपने जो है पर्सनल ग्रूमिंग पे जो है तवज्जो देनी है, तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर सच चैनल्स. इवन फेसबुक पे भी यू कैन फाइंड मैनी ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स जहाँ पर पर्सनल ग्रूमिंग से रिलेटेड जो है आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है, पेजेस मिल जाते हैं. सो ऑलवेज सर्च फॉर सच थिंग्स जो कि आपको हेल्प करें, चाहे आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी में हो, चाहे आपकी पर्सनल ग्रूमिंग में हो. ओके, एंड देन इसमें जो एक और पॉइंट आ जाता है, दैट इज़ इंस्पिरेशन फॉर क्रिएटिविटी. अब आपकी जो इंस्पिरेशन फॉर क्रिएटिविटी है वो अगेन आपके पर्सपेक्टिव्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, और आप किस तरीके से चीज़ों को व्यू कर रहे हैं. लाइक इफ़ यू हैव अ पॉजिटिव माइंड सेट, यू आर गोइंग टू लुक एट थिंग्स इन द पॉजिटिव वे. अब मोस्टली जो आर्टिस्ट होते हैं या ऑथर्स होते हैं या पोइट्स होते हैं, दे आर ट्राइंग टू फाइंड सम काइंड ऑफ इंस्पिरेशन. अब वो इंस्पिरेशन आप नेचर से भी ले सकते हैं, अपनी सराउंडिंग से भी ले सकते हैं. यू कैन पिक अप इंस्पिरेशन फ्रॉम एनी प्लेस. तो जो इंस्पिरेशन होती है, जो पर्सपेक्टिव्स होते हैं, वो शेप कर रहे होते हैं आपकी जो भी इंस्पिरेशन है. लाइक अगर नेचर आपकी इंस्पिरेशन है तो यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट द गुड थिंग्स, यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट कलर्स, you are going to think about vibrancy, you are going to pick up the positive vibes. So these are the things जो कि आपकी creativity boost करती है, and you can find inspiration from any place. आप अपने घर में बैठे हुए, अपने remote desktop पे बैठे हुए किसी भी चीज़ से inspire हो सकते हैं. Like you can be inspired by just this pen. Like this is a pointer pen. अब अगर मैं इसको जो है खोलती हूँ, and I just look at this nib, this is a brush nib. So इस brush nib को देखकर जो है it gives me inspiration
I can draw so many illustration from it, या I can paint it in a stroke manner. So आप हर चीज से इंस्पायर हो सकती हैं. You don't have to go to offices to get that inspiration can come from within as well. अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो still आपका जो तखय्युल, आपकी जो imagination है, it can give you a lot of inspiration. So creativity has no bounds. It is like it can begin from anywhere. So in the end I would say कि perceptions, basically it tells us about the truth about human nature, yeah, how humans behave in their day-to-day life, yeah, from their surroundings, yeah, whatever they are picking up, and how how they can analyze different things from a deeper perspective. So rather than thinking that there is nothing right and wrong, आपको it all depends how you are looking at things. That is what matters. As long as you are driving something positive out of it, you are moving in the right direction, you are being positive, और आप अपने साथ जो है लोगों को लेकर चल रहे हैं who are being motivated by whatever you are saying or telling them. So that is the essence which you have drived out of from your whole journey. So that is all what I wanted to share today. And let me see if I have missed any comment. I'll just take that comment, and if there's no comment, then you can let me know. If there's someone who wants to come at the top of my screen and I can take you live on camera, if there's anyone. And if there is not anyone, okay, let me see. Yes, so if there is not anyone and this okay, thank you so much. आज तो देखें, आज मेरे कहने से पहले ही आपने ना emojis भेज दिए. So if this topic was clear, show me your emojis. And there's someone at the top of my screen. Alicia, do you want to come live on camera? I'm just going to take you live. If you want to come live, you can come live. बाकी आपकी मर्जी है. एंड अगर इस टॉपिक में से कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई तो देन अगेन यू कैन सेंड मी अ थम्स अप टू शो कि आपको नहीं समझ आई. Okay, you are saying Raja Saeed Zada, thank you so much for joining and watching this session. Yes, you just wait at the top of my screen. I'm just going to add you. ठीक है, I'm adding you now. You are going to live. So now you don't have to do anything. Okay, so I'm just going to wait for it to connect. Okay, so this person, Alicia, I have added him on the live camera. Let's see if he can come live. Yes. So you're here. And there's darkness. Okay, I can't hear you. आप कैमरे के ऊपर अपना हाथ रख लें अगर आपने फेस नहीं रिवील करना. यस. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपका जी लेक्चर जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, मोटिवेशनल थैंक है. यू सो मच. और इसमें जैसे भी हमने बात की थी कि टिकटॉक हो गया या और सोशल मीडिया हो गया जिसको हम यूज़ करते हैं नेगेटिव के लिए मोस्टली, बट इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं जो हम पिक करते हैं, चूज़ करते हैं पॉजिटिवली, राइट. लाइक अपने बिजनेस के लिए या कुछ अच्छे वर्क के लिए, कुछ लोगों की हेल्प के लिए. जैसे कि सोशल मीडिया टिकटॉक पे की जाती है कि कहीं से कुछ गरीबों की हेल्प के लिए, जो पुअर पर्सन रहते हैं हमारे आसपास. मोस्टली हम जो मुस्लिम्स हैं, मुसलमान हैं, हम बस उस वक्त तक रह गए हैं. जैसे कि रमज़ान आ गया तो चलो 30 दिन का रोजे रख लिए, ठीक है, अल्लाह अल्लाह कर लिया, उसके बाद भूल जाते हैं. ऐसे ही रबीउल अव्वल हो गया, मुहर्रम हो गया, इन मौकों पे हम इन बातों को, इन जो सानेहा को या इन वाकयात को याद रखते हैं. और अदरवाइज हम लाइफ के अंदर फिर वही बिजी हो जाते हैं, इन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं, ठीक है, और पीछे चले जाते हैं. ऐसे ही हमें हर टाइम पे, हर वक्त पे
जब भी मतलब गरीब लोगों को, जो ज़रूरतमंद है, मिस्कीन है, उनको हमारी ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं कि हम फाइनेंशियली जो है ना उनकी हेल्प करें, उसके अलावा भी हम कर सकते हैं। मतलब उनको कोई वर्क दे सकते हैं, उनको जो है ना कहीं किसी वोकेशन सेंटर के अंदर जो है उनको काम दे सकते हैं, कहीं जॉब वगैरह के लिए उनको अप्लाई करवा सकते हैं। ये छोटा मोटा कोई भी कारोबार, कहीं फैक्ट्री में, कहीं इधर उधर उनकी जॉब कर सकते हैं, तो इससे भी उनकी हेल्प होगी। ये भी सदका जारिया होता है। जैसे आप सदका जारिया आपको मिल रहा है यहाँ पे जॉब काम करते हुए, ठीक है। जी जी, आपने बिल्कुल जी सही जी। कहा। और देखिए, इसमें जो है ना, अगेन वही बात है कि यहाँ पर जो है ना, हर एक बंदा जो है अपने ओन एंड पे जो है कोशिश कर रहा है काम करने की। बट देन अगेन एक कम्युनिटी चाहिए जहाँ पर जो है ना, जो लाइक माइंडेड लोग हैं वो साथ मिल के काम कर सकें। अगर किसी को कोई जॉब मुहैया करनी है तो बहुत से लोग हैं जो कि आते हैं कि भाई हमारी जो है जॉब नहीं है, हमारी जॉब करवा दें। तो अगर इस तरीके से यानी लाइक माइंडेड इकट्ठे हो जाएं और आप उनको जो है आगे रेफर कर सकें, तो लोगों का कोई ना कोई जरिए रोजगार जो है निकल आता है। ये सब कोर्स तो ये भी एक सदका जारिया है, एक अच्छा अमल है, जो कि हम लोग मतलब गरीब लोगों के लिए कर सकते हैं, या मतलब जो जरूरतमंद है, जो मतलब इसमें फीमेल्स भी आ जाएंगी जो घरों से नहीं निकलना चाहती हैं, नहीं निकलती, उनकी मजबूरी है, घर में कोई फर्द नहीं होता, तो उनको मतलब इस तरह के काम दिए जाएं। जैसे ऑनलाइन मोस्टली जो है ना ऑनलाइन फ्रॉड का काम है, मतलब उस पर धोखाधड़ी की जाती है, ब्लैकमेलिंग की जाती है, और भी मतलब हम्म। बहुत से इसमें जो है ना स्कैम्स आते हैं, ठीक है, हम बिल्कुल। आए दिन देखते हैं। तो इसके अलावा भी हमें चाहिए कि जैसे फीमेल्स के लिए कोई सिलाई वगैरह का कोई इस तरह का सिस्टम हो, या मतलब वो घर में बैठ के कुछ ऐसा काम करके हम्म। ऑनलाइन सेलिंग करें। मतलब मोस्टली लोग कर रहे हैं, जो हम्म। मतलब बड़े लोग हैं, रिच लोग हैं, वो तो कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको थोड़ा सा हम्म। मौका देना चाहिए, उनको मतलब थोड़ा सा उनके काम को अप्रिशिएट करना चाहिए, थोड़ा सा जो है ना वो इस काम के अंदर जब वो आएंगे तो लोगों की हेल्प होगी, उनकी अपनी भी मतलब ये है कि उनके दिन अच्छे होंगे, जो करेगा उसके लिए दुआ आएगी, दुआ दिल से दुआ निकलेगी। बिल्कुल। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हो सकता है ये फ्रॉड हो, या मतलब कुछ लोग बेचारे गरीब भी होते हैं, ठीक है, कुछ लोग हम्म। सफेद पोश, जो जो हालात हमारे पिछले कोरोना में थे, या हम्म। मतलब अब जो मुल्क के हालात हैं, महंगाई बिल्कुल। के, बेरोजगारी के, तो इस चीज को हमें बिल्कुल। जो है ना वो मद्देनजर रखते हुए उन लोगों का भी ख्याल करना चाहिए, ना कि सिर्फ एक महीने के लिए कि ज़कात सदका दे दिया बस ठीक हम्म। है काफी है। हम्म। नहीं, ऐसा नहीं, नहीं वो तो करना बहुत चाहिए, जरूरी है। तो वो तो प्रॉपर। देखिए, ये जो ये जो इंसानी जज्बा है ना, ये तो थ्रू आउट द ईयर चलना चाहिए। और आपको जो है प्रोएक्टिव होना चाहिए। अगर आप घर से नहीं निकल सकते तो आप अपने साथ जो है एक दो लोग ऐसे रख लो जो कि जो है जाकर सर्च कर सकें कि भाई आपके नेबरहुड में जो है कौन से ऐसे लोग हैं। अब प्रैक्टिकली जो लोग रेंट पे रह रहे हैं, आई थिंक उनसे ज्यादा सफेद पोश कोई नहीं है। क्योंकि अगर आप जो बिल्कुल है इकोनॉमिक कंडीशंस देखें तो इकोनॉमिक कंडीशंस में जो है अगर किसी के घर की जो है 25 या 40 या इवन 50,000 भी जो है तनख्वाह है, तो उस तनख्वाह में वो क्या कुछ पूरे करें। जिस तरीके से एक तूफान बदतमीजी है बिल्स की, कि आप बिल्स बिजली यूज नहीं कर रहे हैं, ना ही आप उसमें गैस यूज कर रहे हैं, बट बिल्स जो है आसमानों से बात कर रहे हैं। तो उस 50 में जो है आप क्या कुछ पूरा करोगे? आप वो बिल्स का करोगे, गैस का करोगे, बच्चों की स्कूल फीस करोगे, या अपने जो है जो बुनियादी जो है खर्चे हैं उनको पूरा करोगे? तो ये सारी चीजें देखने वाली हैं। अब बेसिकली तो ये काम रियासत का है। अब रियासत उस पोजीशन में है नहीं कि वो आपका सोच सके। तो एज इंडिविजुअल ही आपने सोचना है। तो आप इंडिविजुअली जो है जब एज कम्युनिटी के जो है एक शक्ल तैयार करोगे, लोगों लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिलोगे, तो फिर आप जो है लोगों को आहिस्ता आहिस्ता करके जो है एड्रेस कर सकते हो। तो इसके लिए जो है लाइक माइंडेड लोगों का जो है आपस में मिलना जरूरी है, ताकि जो है एट ग्लोबल लेवल जो है ना, अपने पहले लोकल फिर जो है ग्लोबली आप उस तरीके से इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही कम्युनिटीज बनी हुई हैं हमारे मुल्क में, तो मतलब बहुत कम है। यहाँ अब्रॉड के अंदर, या मतलब और जो कंट्रीज के अंदर हम जब देखते हैं इन लोगों को कि ये कैसे अपने लोगों की हेल्प कर रहे हैं, कैसे मतलब ये है कि उनको सरवाइव करने के लिए बहुत आसानी दे रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज है। हम्म। तो चलें इंशाल्लाह तो इस पे भी जो है ये बात बात करेंगे ये कि बात किस तरीके से किया जा सकता है। बिल्कुल। दूसरा ये कि हमें जो है ना
ये सारा इस सिनेरियो के अंदर हमें ये भी देखना चाहिए कि हम अपनी लिमिट में रहें, रिस्पेक्ट में रहें, किसी का नाजायज फायदा ना उठाएं, ठीक है, किसी की शराफत का या किसी की बातचीत का, ठीक है। तो बहुत से हम ऐसे वाकयात देखते हैं कि कोई हेल्प करते हैं तो फिर उसके बदले में वो उनसे कुछ ना कुछ डिमांड करते हैं। तो ये हम्म। थिंकिंग, ये सोच हमें अपनी बदलनी चाहिए, लोगों से मुहतात रहना चाहिए। ये बिल्कुल। जो मजबूरी का नाजायज फायदा उठाते हैं, चाहे वो हमारे मुल्क के अंदर हम देख लें, तो हमारे जो है, हमारे जो ऊपर वाला तबका है वो लोग ऐसे ही हैं, ठीक है। तो हम्म। इस तरह है ये सिस्टम। तो ठीक हम्म। है, इंशाल्लाह जिंदगी बखैर। तो फिर कभी ऑनलाइन आएंगे तो इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। दूसरा ये कि एक जरूरी बिल्कुल। बात ये कहनी थी कि मुझे याद आ गई, कि वो ये कि अगर हम किसी गरीब की हेल्प करें तो कुछ ऐसा ना करेंगे जैसे हम कुर्बानी पे अक्सर करते हैं ना, कि थोड़ा सा गोश्त उठा के दे देते हैं। तो ये एक किस्म की उसकी हम्म। तजलील होती है, मतलब इतना खा सकें कि उनका हम्म। एक टाइम का अच्छा खाना हो जाए। ऐसे ही मतलब गरीब की अगर हेल्प करें, कुछ राशन ऐसा दें कि मतलब उनका कुछ थोड़े टाइम का हो। ये ना हो कि एग्जैक्टली। जी उनकी मतलब इंसल्ट हो, उनकी उनकी जो गुर्बत का जो है ना हम मजाक उड़ाए। तो ये चीज नहीं एग्जैक्टली। होनी और चाहिए। अच्छा, देखिए, अगेन जो है, अगर इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में इसको देखा जाए तो ये चीज बहुत क्लियर है कि जब आप किसी की मदद करें तो एक हाथ का दूसरे हाथ को पता ना चले। तो सिमिलरली जो है, आप जो भी कर रहे हैं इट शुड बी वेरी कॉन्फिडेंशियल। किसी को ये ना पता चले कि ये फलाने बंदे ने दिया है, फलानी बंदी ने दिया है। इट शुड बी वेरी कॉन्फिडेंशियल। तो यह है कि आपको जो है अपने एंड पे जो है लोग जो है डिस्कवर करने हैं कि वो कौन से लोग हैं जिनकी आप हेल्प आउट कर सकते हैं। और देन वही आप वाली बात है कि किसी की तजलील नहीं करनी, कि आप अपने तरीके से हेल्प करें विदाउट किसी की तजलील किए। क्योंकि मैं जो ये चीज बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे देखती हूँ कि भाई लोग जो है फूड ड्राइव्स कर रहे हैं या क्लोथ्स जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और वीडियोस बना रहे हैं और शो ऑफ कर रहे हैं। तो मजहब में तो ये शो ऑफिंग का जो है कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ये इस कोई जो है नया इस तरीका है, जी, मेरा ख्याल है, इसके भी दो सब्सक्राइबर्स लेने आपकी का। बात, जी जी, इसके भी दो पहलू हैं, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। पॉजिटिव ऐसे है कि हम उसको देख के ना उसको हम अच्छा जज करें, ठीक है, उसी तरह के हम किसी को अगर देखेंगे तो उनको देख के हम सबक हासिल करें, और हम भी वैसे दूसरों की हेल्प करें। लेकिन जो शो करेंगे या मतलब दिखावा होगा, वो चीज़ अच्छी नहीं है, रियाकारी अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है, हम्म। कि मतलब कि मैं हेल्प कर रहा हूँ या मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, तो ये बात है। तो इसलिए जो है ना, इस चीज़ को भी थोड़ा सा, वो जैसे भी अपने उसके अंदर लाइव सेशन के अंदर आपने ये बात की है कि यहाँ पे हर किस्म की चीज़ पाई जाती है टिकटॉक के ऊपर ना, अच्छी भी और बुरी भी। अब ये हमने पिक एंड चूज करना है कि हमने क्या उठाना है। ऐसे ही एग्जैक्टली। मोबाइल के अंदर सब कुछ होता है, ऐसे ही टेलीविजन के अंदर या मतलब नेट के ऊपर हर चीज़ पाई जाती है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। हम्म। अब ये हमने थिंकिंग लेनी है कि हमने क्या लेना है, हमने पॉजिटिव लेना एग्जैक्टली। है या नेगेटिव लेना है, ठीक है। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ है, खबर नहीं छोटा, बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं। तो इस चीज़ को जो है ना, इंशाल्लाह आप माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रही हैं, और हमारी भी कोशिश है कि इंशाल्लाह हम भी कुछ ना कुछ इसके अंदर अपना मतलब थोड़ा पार्टिसिपेट करते रहें, या कुछ अपना हिस्सा डालते रहें। कि मेहनत ओके, आपकी थैंक है, दरख्त आप हैं, हम तो एक छोटे से जो है ना, एक ही आप कह लें कि साइड पे लगे हुए पौधे, या मतलब कुछ शाखें ही बना सकते हैं। माशाल्लाह आप दरख्त हैं, तो आप फैला नहीं नहीं, रही आप हैं भी बहुत मतलब बड़ा दरख्त अच्छी। हैं। आप ऐसे अपने आप में अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अच्छा खासा आप दरख्त हैं। तो ये है कि आपने मतलब अपने लेक्चर से, अपनी मोटिवेशन से लोगों को साया किया हुआ है, ठीक है, मतलब अपनी बातों से। और ऐसे लोग जो है ना, ये इंसान के बस में कुछ नहीं होता, ये गॉड गिफ्टेड होते हैं। तो एक आप अल्लाह की तरफ से जो है ना, आप गॉड गिफ्टेड हैं उन लोगों के लिए, जिनकी रहनुमाई होती है, जो आपको गाइड जिनको आप गाइडलाइन देती हैं, जो आपको बहुत शुक्रिया आपका। फॉलो आप करते हैं। भी जो है थैंक बहुत यू। बहुत अच्छे तरीके से आप भी रहनुमाई कर रहे हैं। लाइव सेशंस में आकर इतने अच्छे अच्छे आप कमेंट्स देते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे जो है वन टू वन किसी दिन मैं जो पॉडकास्ट आपके साथ करूंगी, चाहे आप इसी तरीके से अपने कैमरे पे टेप लगा लें। आप अगर चाहते हैं कि नहीं, आपका टेप सिर्फ नहीं एवटार लगाएंगे, आए। थम हाँ नहीं, लगाया अभी था। तो। दूसरा ये कि हाँ इशू अभी। ये था कि मैं फ्लैट में था, तो मेरे साथ मतलब और जिस तरह है, आपको साउंड आ रहा होगा मैच का, या जिस तरह है इंडियन लोग हैं, या जी जी। मतलब और लोग भी होते हैं। तो बस ये हम्म। था।
क्योंकि यहाँ पे आज रेनी अच्छी खासी थी, तो इस वजह से तो अच्छा ऑफ काफी लोगों का चल रहा था इस वजह से। अच्छा हाँ, अदरवाइज अच्छा, नहीं मैं नहीं, मतलब कोई मसला भेज नहीं है, सकता। कोई नहीं, कोई नहीं, आप जो इसलिए है फोन में थोड़ा थंब सा अपना वॉइस में इशू आ लगा। रहा था। हाँ, नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, आप अपना बेशक जो है थंब लगा लें, या वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि आप जो है टेप लगा सकती हैं, जो कैमरे वाला है ना, जो नुक्ता बना हुआ है, उसके ऊपर टेप लगा लें, तो तब भी जो है ना इमेज नहीं आती, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो चलें, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह फिर मैं इस सेशन को वाइंड अप करती हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, थैंक यू। ठीक है, जज़ाकल्लाह, थैंक दुआ यू। में याद रखिएगा। जी जरूर, और बाकी लोग थैंक भी यू। सीखें इस चीज़ से। तो मैं मतलब लोगों के लिए, आपके इस प्लेटफॉर्म से लोगों को जो है ये थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपके जो है लेक्चर्स हो गए, मोटिवेशनल जो आप बातें करती हैं, उनको फॉलो करना चाहिए, सुनना चाहिए, ताकि उनकी रहनुमाई हो और वो आगे कुछ कर सकें, कुछ सीख सकें। थैंक यू। अल्लाह इंशाल्लाह। हाफिज। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। Okay. Thank you so much. So this was Alicia, and ये बहुत रेगुलरली जो है कंट्रीब्यूट करते हैं इन माय कमेंट बॉक्स, और अक्सर जो है ये बहुत अच्छी जो है चीजें जो है बता रहे होते हैं और शेयर भी कर रहे होते हैं, जो भी इनके फीडबैक्स होते हैं। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग टुडे सेशन। तो नाउ आई विल वाइंड अप, और इंशाल्लाह जो है कल सुबह दोबारा मुलाकात होगी वो लॉग में, एंड इन द इवनिंग एट 8 p.m. in this live session. So in the meantime, if you want me to discuss anything, you can pour in your comments or your topics in my inbox and let me know. और अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो वो भी आप मेरे इनबॉक्स में जो है बेशक जो है पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसके भी आंसर कर दूंगी। और you're welcome, Alicia. Thank you to you who was ready to come live on my, in this live feed. So that would be all. Take care, and goodbye. Allah Hafiz.